Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. But because he's from Punjab, he's called a cat. पंजाब की कहानी फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स में आएगी। Bother me as a performer, no, bother me as a human being. पर पंजाब जो है वो सदियों से उजड़ता है, बसता है। That question of yours is very relevant. 8 गाने, 8 ओरिजिनल सॉन्ग है। In this whole revenge drama, how are you exploring various facets of your personality through the character? I met couple of people who were cat. So you have to constantly keep hiding what you're feeling. Break that stereotype of balle balle, bhangra pawing and gun toting Sardar. Alright then, brace yourself for a cat and mouse chase between spy and goons only on Netflix. That's the tagline of the show. With that, we got covered the title, the giant of the platform that Netflix is. What we have not gotten covered is the man himself, who is known for his versatility and his acting prowess. Randeep Hooda, first of all, thank you so much for joining us. And Balwinder Singh, of course, who's a writer and director of the show. Thank you so much for joining us on Latestly. Cat, very interesting title on a very interesting platform. Yeah. Your take? Well, usually these people who, are, informing on other people are called rats. It's called a rat. But because he's from Punjab, he's called a cat. Is that how it was written? It was mapped in your cat brain? was a term used in that era. Correct. Counteraction terrorism. Yeah. तो वो था उस वक्त में. Something like It's a very authentic thing. So I really liked it. I met couple of people who were cat. तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. That was very interesting. And being a Punjabi, being a सरदार, तो मुझे वो उस दौर में हुआ था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने टाइटल भी रखा है और कहानी भी ऑफ कोर्स उसी किरदार की, उसी कैरेक्टर की है. एंड विद रुपिंदर, अनिल एंड जिम्मी, हम चारों ने मिलके ही लिखा था. तो जब हम उसकी और डिटेल में गए तो हमको बड़ा मज़ा आया था कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है उस कैरेक्टर की. तो देन अकॉर्डिंग टू दैट वी समहाउ मेड अ स्टोरी एंड वो अब देख लेंगे 9 दिसंबर को. Randeep, this is your second outing with Netflix. First was a film, Extraction, with a global appeal. This one is very desi, and yet it has a global appeal. I've seen first two. Yeah, because when you go local, you go global. Absolutely. When you go to hyper local, you go even more global. Yeah. That's the norm. That's the thing. This will turn out to be the Narcos of India. Yeah. So from a film to series, does a performer need to tweak his craft a bit? Not really. Not at all? Work is the same. Yeah. It's just a longer job. And for the writer-director? I'm asking this question basically because if it is a series, you need to have a hook for the audience to lead to the next episode. So taking all those parameters in check, do you have to... See, I don't know that, but if the character is interesting, yeah, and if you're really, vouching for that character, then people will see. Yeah. Be it a film, be it a series. कि अगर आप उसके साथ अटैच होके उसकी जर्नी में इंटरेस्टेड होगे कि यार ये ना हो जाए इसके साथ, यार ये तो बड़ा रिस्क ले रहा है, ये ना हो जाए, तो वो अगर आप अचीव कर रहे हो तो देन इट डजंट मैटर कि वो सीरीज है या फिल्म है. बट द थिंग, सीरीज के साथ एक अच्छी चीज़ क्या है कि यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू टेल योर स्टोरी एज अ राइटर. करेक्ट. तो आपको वो नहीं करना पड़ता कि यार शिट 2 घंटे हैं, कैसे फटाफट करो यार, 60 सीन्स लिखने हैं, वो नहीं है. आप उस कैरेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि उसकी क्या पास्ट लाइफ रही है, वो कैसे जा सकता है, उसके और इंसिडेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो. हुक पॉइंट तो चाहिए, चलो वो तो एक पैटर्न है एक स्क्रीन प्ले का कि चलो शो का एक अपना एक फिक्स पैटर्न होता है. बट मुझे लगता है कि अगर आप उस कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं एक बार तो देन फिर आपको वो खींचता है वो कि वो कितना मज़ेदार कैरेक्टर है या उसके साथ क्या क्या होगा, वो फायदा उस चीज़ का. कितना इंपॉर्टेंट होता है ये प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स जितना? बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कितना पुश देता है वो? पुश देता है, पहली तो आपको बड़ा पुश देता है क्योंकि इट्स अ ग्लोबल. और जब आप स्पेशली, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ क्यों है, कि आप कहानी कह रहे हैं पंजाब की, और सभी जानते हैं कि पंजाब के लोग सारी जगह कि चाहे आप यूएस बोल लें, कनाडा बोल लें, यूके बोल लें, ऑस्ट्रेलिया बोल लें, हर जगह है. तो ये प्लेटफॉर्म फिर वो हर जगह रीच कर सकता है लोग. और इस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी वो जो फॉर्मेट है जिसको आप लॉन्ग फॉर्मेट बोल रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं कि हमने इन्वेंट किया, वो पहले से ही चल रहा है. तो एक आपकी टोन सेट रहती है उधर की यार ये शोज देखने, और एक वो ऑडियंस हमेशा आपकी है कि यार ये लॉन्ग फॉर्मेट दिखती है. तो अगर उनको वो स्टोरी मिलती है जो पंजाब की है, जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है,
तो उसके मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि पंजाब की कहानी फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स में मतलब आएगी, तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उसमें हम एक दौर दिखा रहे हैं इंसर्जेंसी का भी और उसके बाद का भी, तो मेरे लिए वो बड़ा बहुत ज़रूरी था. एंड नेटफ्लिक्स बैकिंग दिस प्रोजेक्ट इज. When you talk about the flavor of Punjab, the flavor of that particular region, this guy is known for breaking the mold. He does not go with the template. And Bollywood is known for stereotyping, people from certain region, especially Punjab. कि धूमधाम की शादी होनी चाहिए, ऐसा flashy होना चाहिए, ऐसा over the top होना चाहिए. That question of yours is very relevant. Finish it. So while breaking that mold, what was going in your head that I'm going to perform it in a certain way in order to break the mold? Going along with the script, of course. That was one of the things that me and Balwinder discussed in detail. That the earlier on in mainstream cinema or Bollywood cinema, whatever, it wasn't even called Bollywood then, cinema. Sardars used to be made fun of a lot. Joke marega, koi stupid cheez karega, 12 baj gaye, ye ho gaya, wo ho gaya. Then came the other kind of Sikhs who, were all about, on guns toting, even in music videos. True. Then came this whole thing of, oh, Paji Makhan ji, ye, wo. They've stereotyped very spiritual and humble and deep-rooted people into these bad stereotypes, which was something that I was absolutely not going to be a part of. Did that bother you as a performer? Bother me as a performer? No, bother me as a human being. Right? So we definitely chose a more spiritual, because Sikhs are more spiritual, mannered and cultural people than what we have been showing. So it was definitely a conscious attempt to bring that about as a part of the character who, is really a reflection of the people. What he does and what circumstances he gets himself into is what the people of Punjab have been doing for years. They've been fighting that, or they've been struggling with it. So it was a very good choice that we made, that, to break that stereotype of balle balle, bhangra pawing and gun-toting Sardar. He takes the gun, but it's not for the things that they show in music videos and Bollywood movies. So it was a very unique... I feel, people will judge it for themselves, but that's what we were attempting. And this change is happening because now the people are getting exposed to various kind of content, especially mature content, and thanks to the platforms like OTT, where you can explore, expand. What is it, OTT? Over the top? So in that sense, do you say thank God? Yeah. Do you say thank God as a performer, as a creator? Yes. Yeah. Because इनके आने से कम क्या है कि आप उस तरह से कहानी कह सकते हो जिस तरह से आप कहना चाहते हो. जी बिल्कुल. क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे हो ना, तो बहुत फैक्टर्स हैं. मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग चीज़ें बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स अलग चीज़ें बोलते हैं, तो वो एक अलग फॉर्मेट हो जाता है. इसमें क्या है कि आपको रियलिज्म थोड़ा सा लेके आना है, जितना है, जो रियलिटी है जैसी है, आप वो कितना अचीव कर सकते हो. विद की जो नेटफ्लिक्स टीम है कि वो भी बैक करती है कि नहीं यार, यू नो द थिंग, आप बनाओ इसको अपने हिसाब से जैसे आपको बनाना है. तो वो चीज़ हम करने में अचीव हो जाता है. तो वो बेस्ट चीज़ है जो आप बोल रहे हो OTT प्लेटफॉर्म की, कि कम से कम एज अ क्रिएटर आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी कोई वो इंटरफेरेंस नहीं है कि यार इसको ऐसा कर दो, इसमें ये कर दो, इसमें वो कर दो. अब जैसे मेरा इसमें था कि कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कहा कि पंजाब जब हम बात करते हैं तो यार गाने होने चाहिए. तो फिर हमने अपने 8 ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाए. वो नेटफ्लिक्स को मैंने कन्विंस किया, तो वो बोलते कि हाँ करो. 8 गाने, 8 ओरिजिनल सॉन्ग्स बने. Really? ओरिजिनल 8 सॉन्ग्स हैं, जो मुझे लगता है कि पहले कभी किसी सीरीज में ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है, या हुआ होगा तो पता नहीं मुझे. तो क्योंकि पंजाब के साथ आप सॉन्ग्स रिलेट करते हो, पंजाब के साथ आप फन भी, पर पंजाब जो है वो सदियों से उजड़ता है, बसता है, क्योंकि एक वही रूट था. तो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद गजनवी, वो उधर से ही आए हैं. तो उजड़ता, बसता, पार्टीशन, फिर इंसर्जेंसी, तो वो कभी भी ऐसा पीसफुल नहीं रहा है कि भैया. तो उधर के लोगों को भी वो एक पूरे एक जज्बा रहता है लोगों का, कि वो जो गुरुओं की दी हुई वो बातें हैं, वो उनको पता है कि कैसे हमें जीना है, और हमें जो भी चीज़ होगी पास्ट होगी, फिर फ्रेश तरीके से वो शुरू होते हैं. तो वो जो जज्बा है, वो जो चीज़ें हैं,
वो वापस नॉर्मल हो जाती हैं, वापस चीज़ें हो जाती हैं, तो वो एक लाने की कोशिश थी जिसमें ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और वो आई एम श्योर इंडिया में बहुत जगह पे अलग अलग जो जोन है उसमें सब चीज़ें बन रही हैं। तो आप देखेंगे, आप कभी सिनेमा में ये सब कंटेंट नहीं देखते थे, ये सब तभी से देखना शुरू हुए हैं जब से ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं। बिल्कुल। तो कम से कम एज अ क्रिएटर राइटर वो चीज़ को आपको फ्रीडम मिलती है कि यार आप इस रीजन की आप फिल्म बना सकते हैं या शो बना सकते हैं। In this whole revenge drama, how are you exploring various facets of your personality through the character? Because the character is put into many situations which are interesting, which has great conflict, and there is always an underlying tension that is on, and which gives you, as a performer, a more of a live wire kind of a space, though you have to control it. So you have to constantly keep hiding what you're feeling, and I find that's very intriguing as an actor, because most of the time in our lives, we are usually trying to not show what we really feel. So that was very interesting. My last question, what is your reading of the situation in Punjab? What was your research material and what is your take on the situation? Right now, at that time? Yeah, your research about that time. As you said, it was always a land where foreigners invade. It was a land of invaders, and yet there was peace somehow restored and still an integral part of India. So when you see your script via that angle, what was the material that you looked? See the thing is, problem तो हर जगह है, हर रीजन में है, हर जगह पर है। पंजाबीज का ये रहता है कि यार उनका ये रहता है कि उनके एक स्ट्रॉन्ग एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो शायद गुरुओं से आई होंगी या जो जैसा भी है, तो वो उनको वो चीज़ बॉदर नहीं करती कि कोई चीज़ घट रही है या हो गया है। पर वो चीज़ है कि अगर आप पॉलिटिक्स उसमें इंक्लूड कर देते हो तो फिर चीज़ें हर जगह पे ख़राब होती हैं। पर अभी जो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन इज़ गुड, और मुझे ये था कि हमने उस वो दौर देखा हुआ था, तो वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अगर ऐसा कोई कैरेक्टर क्रिएट करें तो उसमें मज़ा आएगा, और उसमें एज अ राइटर हमें भी बड़ी खुशी होगी कि लिखने में थोड़ा मज़ा आएगा और परफॉर्म करने में बाजी को मज़ा आएगा। तो उस तरह से मैंने वो कहानी लिखी हुई है हमने, तो कुछ सोच समझ के नहीं है, आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है एज अ स्टोरी टेलर, आप उस लिखते हो। It's an emotional story of a family of two brothers, to be precise, and they're put in these circumstances which are real, which happened in Punjab, which includes the insurgency and the huge drug problem that started, and all of them are related, one to the other. It's a chain reaction. It's like the butterfly effect that's been happening. So very smartly to tell the story with a not highlighting, but with the backdrop of two biggest conflicting things since the partition in Punjab. Balwinder and his co-writers and directors, they have put the characters in that so that you get to know that in the background anyway. But you're following the emotional, fictional story of these characters who are actually fictional, but they do exist in different forms and people. Looking damn interesting and intriguing. Here's hoping you will achieve what you want to achieve with this one. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.